Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome in a class. Dear students of grade 8, in previous online session and in regular classes we have discussed some units from our general science book. So in this online session we will discuss some remaining units from our book. Now students, in this class we will start unit number 4, that is pollutants and their effect on the environment. Students, do you know what is environment? Environment is anything around us. We can say that anything around us is known as our environment. The things which are around us. So all those things which are available or which are present around us is known as our environment. Students, do you know what are the components of environment? So there are two type of components of the environment, that is the biotic components of the environment and abiotic components of the environment. What are the biotic components? The components, or we can say that the living components of the environment is known as biotic components, and the second one is abiotic components. So we can say that the non-living components of the environment is known as abiotic components. So biotic components are the living components of our environment. For example, plants, animals, human beings, or we can say that all the living components of the environment are biotic components, and abiotic components are like fire, air, sun. These all are the abiotic components of our environment. Students, do you know how our environment get polluted? Our environment get polluted due to the human activities as well as the natural activities. The environment is polluted by our activities or also by the natural activities. And this type of all disturbance is known as pollution. So students, today we will discuss about the pollution. So students, what is pollution? Pollution is any harmful change in our environment. Students, pollution क्या है? पोल्यूशन इज़ एनी हार्मफुल, जब आपकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल चेंज आपको नज़र आए कि जिसका आप पे वर्स्ट इफ़ेक्ट हो या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, देन दैट टाइप ऑफ चेंज इज़ नोन एज pollution. So how we can define pollution? Students, you have to underline all the important words and definitions. So take your pencils in your hand. So what is pollution? So the first definition for pollution is any unwanted and undesirable change in the environment that affects the atmosphere and disturb the ecosystem is known as pollution. Students, what is ecosystem? Ecosystem is simply the interaction between the living organism and the environment is known as ecosystem. So any unwanted and undesirable change in the environment that affects the atmosphere and disturb the ecosystem is called pollution. So another one definition of pollution is the addition of certain contaminants or pollutants to have environment is called pollution. Students, here contaminants or pollutants are those things or those substances which create pollution or which cause pollution. So what is the second definition for pollution? It is the addition of certain contaminants or pollutants to the environment is called air pollution. यानी कि जब आपके environment में कुछ unwanted या कुछ undesirable change होती हैं या कुछ ऐसे pollutants या harmful chemicals आपके environment में आ जाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जो आप पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं. सो देयर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स विल काज pollution. So this whole change is known as pollution. So because of these changes our environment get polluted, and as a result this pollution will draw negative effect on animals, plants, as well as humans and other organisms. So animals, plant, human and all other organisms suffer due to the pollution.
So students, what is pollution? Pollution is any unwanted and undesirable change in the environment that affect the atmosphere and disturb the ecosystem is called pollution, or in simple word we can say that any harmful change in our environment is known as pollution. Now students, we will move towards the types of pollution. So how many types of pollution are there? There are majorly 4 types of pollution. As you look at the pictures, so there are 4 types of pollution, that is air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. So these 4 are the basic types of pollution. So in this lecture we will discuss in detail about the air pollution. व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन क्या है? जब आप इसको सिंपली हम कहते हैं हवा की आलूदगी या फिर हमारी एटमॉस्फेयर या एयर में जब कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या फिर अनडिज़ायरेबल चेंज आपके एनवायरनमेंट में जब क्रिएट होती है आपके एटमॉस्फेयर में, जिसकी रिज़ल्ट में आपकी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है, सो दिस इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, अर्लियर 19th सेंचुरी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा वास्ट एरिया पे फैली हुई नहीं थी, लेकिन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में एयर, जैसे ही इंडस्ट्रीज़ का इनकलाब आया, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जब क्रिएट हुई 19th सेंचुरी में, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट पोल्यूट होना शुरू हो गया. और सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की टाइप क्रिएट हुई, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़. क्योंकि आपके पास जैसे इंसान की ज़रूरियात इंक्रीज़ होती गई टाइम टू टाइम, तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ का आगाज़ हुआ. जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई तो उसके रिज़ल्ट में इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट किस्म के फॉसिल फ्यूल्स यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्रिएट होने शुरू हो गए. डिफरेंट फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में हाई लेवल ऑफ वेस्ट गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर जानी शुरू होंगी. सो दैट्स वाई जब आपके पास इतनी हाई अमाउंट में गैसेस आपके एटमॉस्फेयर को या एयर को पोल्यूटेड करेंगी, तो ये जो है डेंजरस इफ़ेक्ट या फिर वर्स्ट इफ़ेक्ट ड्रॉ करेंगे ह्यूमंस पे एज वेल एज एनिमल्स पे, प्लांट्स पे एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द ecosystem. So it will disturb all the ecosystem. So how we can define air pollution? Air pollution is the contamination of pollutants in air are called air pollution. यानी कि आपके एयर के अंदर कंटामिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी कि जब आपके एयर के अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, जो कि पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन. सो ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में जब इंक्लूड हो जाते हैं, सो दे विल काज पोल्यूशन. बट स्पेशली जब आपके पास डिफरेंट किस्म की, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो गैसेस आपके पास होती हैं वो आपकी एयर के अंदर चली जाती हैं, तो ये आपकी एयर को पोल्यूट करती है. सो जैसे आपकी एयर जो है इन हार्मफुल गैसेस से पोल्यूट होती है, सो एज अ रिज़ल्ट एयर पोल्यूशन काज होती है. सो एयर पोल्यूशन जो है ह्यूमंस को एज वेल एज एनिमल्स को या प्लांट्स को या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है. सो दे विल काज वर्स्ट इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट और वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट. So what is air pollution? The contamination of pollutants in air are called air pollution. Students, in which century pollution begins to recognize as a serious threat? So in 19th century, pollution begins to be recognized as a serious threat due to the industrial revolution which are created in the 19th century. So this air pollution is because of the burning of the fossil fuels in the different factories and industries, which cause huge amount of smoke which are released from the industries and they are added in our air, so they will pollute our air. So as a result air pollution will cause. So this is the major cause of the air pollution. Students, what are the effects of air pollution? So during air pollution, harmful pollutants are released into air. Some harmful pollutants which are undesirable
are added in our air, these harm all living organism, and it may be man-made or it may be natural. यानी कि ऐसे पोलूटेंट जो कि कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ मैन मेड भी हो सकते हैं. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैन मेड में आपके पास फैक्ट्रीज का स्मोक जो है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं विच विल कॉन्टामिनेट आर ईयर. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन और रोटिंग वेजिटेशन, यानी कि क्रॉप्स का गलना सड़ना रोटिंग वेजिटेशंस में आ जाता है, या फिर आपके पास वॉल्केनिक इरप्शंस होती है जिसकी वजह से ये दीज आर द नेचुरल पोल्यूटेंट्स विच कॉज एयर पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स, what are the main air pollutants? So the main air pollutants in air are, students, what is the pollutant? Pollutant are the substances which cause pollution in our environment or in our ecosystem. So we are talking about the pollutants of air pollution. So the pollutant which cause air pollution are known as air pollutants. So those pollutants which cause air pollution are known as air pollutants, and they contains carbon monoxides, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, that is NO, nitrogen oxide and nitrogen dioxide, and also we can say that chlorofluorocarbons, CFCs, which are in earlier time which are used in refrigerators. So the main air pollutants are carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen and chlorofluorocarbons. So these all are produced by human activities as well as natural sources. So these all pollutants when combined together, so they will form air pollution. When these harmful pollutants will released or these harmful pollutants will were added in our air, so they will pollute our air. So as a result air pollution will cause. Students, what are the main pollutants in air pollution? The main pollutants are carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen and chlorofluorocarbons, that are CFCs. So this is all about today's lecture. So now we will move towards the summing up. So students, first of all we have discussed about the environment. Environment is anything around us, anything which are present around us is known as our environment. Then we have discussed about the components of environment. So there are two type of components in our environment or in our ecosystem. So the first one component is biotic component and the second one component is abiotic components. Biotic component are the living component of our environment and abiotic are the non-living components of our environment. So then we have discussed about the pollution. So what is pollution? In simple words we can say that any harmful change in our environment is pollution, or we can say another definition is any unwanted and undesirable change in the environment that affect the atmosphere and disturb the ecosystem is called pollution. So then we have discussed about the types of pollution. So there are mainly four basic types of pollution, that is air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. Then in detail we have discussed about the air pollution. So students, what is air pollution? Air pollution is basically the contamination of pollutants in the air is known as air pollution. When the harmful pollutants are added in our air, they will pollute our air. So this is known as air pollution. So then we have discussed about the causes of air pollution. The main cause of air pollution is when harmful pollutants are released from factories into air. These harmful chemicals will disturb our environment, and these harm all living organisms which are present in our ecosystem, and that pollutants are maybe man-made or they are maybe natural. So then we have discussed about the air
pollutants. So how many air pollutants are there? There are basically different air pollutant which cause air pollution. That is the carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, that is nitrogen oxide and nitrogen dioxide, and the other one is CFCs यानी कि chlorofluorocarbons. So these all are the major air pollutants which affect our environment and cause air pollution. Now students, move towards the home assignment. So students, from this unit I have write some comprehension questions. So you have to write these questions on your assignment pages with neat, clean and proper paper presentation. जो आपको पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ सिखाई गई है, जिस तरह से आपको स्केच ब्लॉग बनाने सिखाए गए हैं, सेम एज इट इज़ आपने असाइनमेंट पेजेस पे नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाकर मंडे को आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है. दैट इज़ द 7 दिसंबर को आपने हर हाल में. इन केस अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करते तो इसका आपको आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे. ठीक है, इन मार्क्स को जब आप इन असाइनमेंट्स को करेंगे तो आपका 50% जो है इन असाइनमेंट्स के मार्क्स काउंट होकर आपकी एनुअल एग्ज़ाम में लगेंगे. और दूसरा 8th क्लास, आप नेक्स्ट बोर्ड की क्लास बनने जा रहे हैं. सो आपने केयरफुली हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है और डिटेल में समझने के साथ साथ आपने प्रॉपर वे में असाइनमेंट्स लिखनी है और प्रॉपर साथ साथ इसको लर्न भी करना है, ताकि आगे जब आप बोर्ड की क्लास के लिए प्रिपेयर होकर आएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आगे अब रिपीट होते जाएंगे. ठीक है, सो आपने ये क्वेश्चन जो कि दैट इज़ द डिफाइन पोल्यूशन, डिफाइन पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स. सो आपने प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ असाइनमेंट शीट्स पर इन इस होमवर्क को करके आपने मंडे 7 दिसंबर को कॉलेज में सबमिट करना है. अल्लाह हाफिज़.